ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા 1 જૂન 2016 થી લઈને 30મી સપ્ટેમ્બર સુધી શરૂ કરાયેલ આવક ઘોષણા યોજનાનો લાભ લેવા ગુજરાતની જનતાને ગુજરાતના મુખ્ય કર આયુક્ત શ્રી બલવિંદરસિંઘે અપીલ કરી છે। પત્રકારોને સંબોધતા એમણે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના અંતર્ગત લોકો આઘોષિત આવક તથા બેનામી મિલકતને 45% ટેક્સ ભરીને કાયદેસર કરી શકે છે। સામાન્ય ટેક્સનું આકલન અને આ યોજનાને સંપૂર્ણ અલગ રાખવામાં આવશે અને 30મી સપ્ટેમ્બર 2016 સુધીમાં આ યોજનામાં ભાગ ન લેનારા બેનામી સંપત્તિ અથવા આવક ધરાવતા લોકો પર ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ કાયદેસરના પગલાં લેશે। वो छूट जाएंगे तो कई लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिसको वो समझते हैं कि तो हमारे हाथ से गई तो वो प्रॉपर्टी वापस उनके हाथ में आ जाएगी, उनके नाम पे होगी अपने। और ये जो संपत्ति आप डिक्लेयर करेंगे इसके ऊपर वेल्थ टैक्स भी नहीं आएगा, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा फायदा है। और किसी तरह की आपकी इस मामले में कोई तंग नहीं किया जाएगा। वैल्यूएशन के मामले में भी जो है प्रॉपर्टी का आप करोगे उस पर भी आपको काफ़ी कुछ फ्री हैंड दिया गया है, काफ़ी कुछ आपको लिबर्टी रहेगी। कोटेड असेट्स की तो जो प्राइस कोटेड है वही आएगी, उसके बारे में तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन जो अनकोटेड असेट्स हैं उनमें आपके पास काफ़ी गुंजाइश रहेगी जो वैल्यूएशन को दिखाने की। और सामान्यतया जो वैल्यूएशन आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट में दिखाएंगे उसको हम चैलेंज सामान्यतया नहीं करेंगे।